कि दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाऊं ठेकर, कि दिल अभी भरा नहीं। Hi, good evening, guys. Am I audible? Am I audible? I'm good. How are you? How are you all? मैं इसीलिए ऑनलाइन आया हूँ. I thought that you all would be feeling a little disheartened, demotivated. So here I am, थोड़ा सा to spend some time with you guys, to know what's your mindset, how things are going right now. Now, whatever has happened, just we should learn to move on in life. See, you all have put in your heart, your soul, your energy, and every ounce of effort that you all had. अगर आपको लग रहा है कि आपका पेपर समवेयर थोड़ा सा अगर खराब हुआ है, तो एक सेकंड के लिए आप रिफ्लेक्ट बैक करिए एंड थिंक, लेट्स फेस द रियलिटी वंस. जस्ट ask yourself, did I actually start preparing for any of the subjects at a time when I should have, or I just kept that particular subject for the last moment? I want each one of you all to ask this question to your own self. क्या मैंने सच्ची में जितना टाइम देना चाहिए था उतना दिया? अगर आपने दिया है, तो आपको आपका कर्म का फल ज़रूर मिलेगा. आप क्यों इतना घबरा रहे हैं? आपने अपना बेस्ट दिया है. जब काउंसिल का करेक्शन होता है ना, सी व्हेन द करेक्शन हैपेंस, a lot of factors and things are taken into consideration, like the stressed environment in which a child is giving, some of the mistakes which is bound to happen on the part of a child, वो as teachers जब हम लोग evaluate करते हैं, हमें समझ आ जाता है. सो करेक्शन के टाइम पे टीचर्स को भी पता होता है किन चीज़ों को उनको ओवरलुक करना है, किन चीज़ों को उन्हें नहीं ओवरलुक करना है. सो डोंट स्ट्रेस योर सेल्फ आउट अननेसेसरीली कि मेरे कम आ जाएंगे, मेरा ये आंसर रॉन्ग हो गया. यू नेवर नो. मैंने अपने एक्सपीरियंस में ऐसा भी सुना है, कि कभी कभी जब टीचर का हार्ट नहीं होता है ना नंबर काटने का, या उनको देना होता है, या दिखता है पेपर में कि इस बच्चे ने बहुत मेहनत किया है, दे जस्ट लेट इट गो ऑफ. दे रिस्क देयर इवैल्यूएशन प्रोसेस. उनका भी तो, जब वो लोग इवैल्यूएट करते हैं ना, तो उनको भी सुपरसीड करने वाले हेड एग्जामिनर्स होते हैं. वो लोग उसको रिस्क में लेते हुए भी मॉडरेशन में नंबर देते हैं. सो ऐसा नहीं है कि टीचर्स आपका अननेसेसरीली कोई भी नंबर काट देगा. डोंट वरी, डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ आउट. जस्ट प्रे टू गॉड कि गॉड, मैंने जितना मेहनत किया, जितना एफर्ट्स डाला, अगर आपको लगता है मेरा मेहनत सच्चा था, मेरा हिम्मत सच्चा था, तो मुझे मेरे फल के हिसाब से उतने नंबर दे देना. एंड क्या हो गया? बोर्ड एग्जामिनर है. इट इज जस्ट वन part of your journey, one part of your life. And the lesson which you need to learn from this board examination is that discipline in any area of work, be it today you are as a student, tomorrow you will be into a grown up individual, हर जगह आपको थोड़ा डिसिप्लिन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सोशल मीडिया, uh, you know, unnecessarily scrolling,
or spending more than required time with your friends. See, everything is a part of life, but then balancing is equally important. सब करना जरूरी है लेकिन बैलेंस करना भी जरूरी है. ठीक है. आई एम नॉट हियर टू गिव यू एनी आंसर. जो भी मेरे को क्वेश्चन का आंसर देना था मैंने आंसर की में बता दिया, विथ लॉजिक बताया. अब आप आंसर पूछना थोड़ा सा बंद कर दीजिए. यू आर जस्ट गोइंग टू फर्दर स्ट्रेस योर सेल्फ आउट बाय आस्किंग फॉर आंसर्स कि इसका क्या होगा क्या नहीं होगा. जो होगा अच्छा होगा, इतना जान के चलिए. ठीक है. इको को लेके बेटा आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आप जाके पहले मेरे वीडियोस को आप चेकआउट कर लो. इफ यू फील सैटिस्फाइड विद द काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन आई एम गिविंग, first you come in sync with my teaching style, my teaching methodology, and post that जो 10 days का गैप है आपका हिंदी एग्जाम के बाद, उसमें बहुत अच्छे से प्रेपरेशन करा दूंगा. बहुत लंबी लंबी मैराथन होंगी इको की. इट विल नॉट बी एज शॉर्ट एज कॉमर्स. हाँ, I'm telling you all beforehand, because eco is one such subject which is not theoretical. I don't know why people consider economics as a theoretical subject. It's a very practical subject. Needs to be dealt with practicality. And मैं आपको उसी वे में पढ़ाऊंगा with the mathematical areas which needs to be focused upon. ठीक है. सर हिंदी हिंदी अब मैं अब हाथ जोड़ रहा हूँ. मुझे हिंदी नहीं पढ़ाना, मुझे कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ाना. आई विल जस्ट stick myself to economics now. That is my last subject. उसके बाद I'm just going to wrap up. Although my heart is sinking, it's feeling heavy to leave you guys and go, because you all have become like a family in this past whole month. Like from the time we have started preparing for English से लेके करीब करीब कुछ 20 दिन का अभी हमारा जर्नी जितना हो गया है, एंड 20-25 दिन का जर्नी हो गया है. सो काफ़ी तकलीफ होगा, बट देन दैट इज़ हाउ लाइफ इज़. एवरी चैप्टर हैज़ टू एंड फॉर अ न्यू स्टोरी टू बिगिन. सो दैट्स हाउ लाइफ गोज ऑन. मे बी शायद किसी दिन मैं आपके शहर में घूमते हुए किसी गली में आपको दिख जाऊंगा, एंड मे बी यू विल स्टॉप बाय लुकिंग एट, अरे दिस इज आर्यन सर, आई हैड स्टडीड फ्रॉम हिम यूट्यूब से. सो मे बी वील मीट एट दैट टाइम, राइट? CUET I won't be able to deal beta, but I can assure you of one thing: the way I have taught you English, if your basics are clear, if you have understood the basics by my video, and same for economics as well. Once you study economics from me, trust me, my offline kids, like those who have studied from me in even in the past years, उन्हें CUET में economics, English and to an extent BST भी, क्योंकि commerce and BST almost same ही है, कभी उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ी है एक्स्ट्रा कोचिंग की. ऑल दे रिक्वायर इज सब्जेक्ट्स, एप्टीट्यूड के लिए थोड़ा सा एंड लॉजिकल रीजनिंग के लिए उनको कोचिंग का ज़रूरत होता है, ग्रूमिंग ज़रूरत होता है. बट इन माय ओपिनियन अगर आपकी जगह मैं रहूँगा तो मैं CUET के लिए किसी कोचिंग पे रिलाई नहीं करूँगा. रादर I would prepare on my own self, एंड आई वुड पे फॉर द मॉक टेस्ट. अगर कोई मॉक ले रहा होगा तो उसके लिए मैं पे करके अपने आप को असेस करने के लिए आई वुड गिव दैट मॉक टेस्ट, बट देन प्रेपरेशन वुड बी माइन. सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप खाली रैंडमली अगर मेरा भी वीडियो ही देखते रहोगे विदाउट पुटिंग इन योर ओन हार्ड वर्क, देन इट मेक्स नो सेंस. नो, इट एब्सोल्युटली मेक्स नो सेंस. ठीक है. अब थोड़ा चिल करो, कोई बात नहीं. ये क्वेश्चन छूट गया, वो क्वेश्चन छूट गया, डर लग रहा है. इंग्लिश लैंग्वेज का मार्किंग स्कीम थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. आई थिंक चारू इज आस्किंग दिस क्वेश्चन, क्या इंग्लिश का मार्किंग स्कीम टफ होता है? सी, पेपर 1 हैज ऑलवेज बीन काउंसिल्स यूएसपी. लैंग्वेज में टीचर्स आर नॉट वेरी कंसिडरेट बिकॉज अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस इज गिवन टू योर सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, your grammatical learning, punctuation, vocabulary, flow of thoughts. But then paper 2 is very moderate. Paper 2 is very moderate. Uska correction is also very easy. Like by reading an answer, if we can make out that a child has understood what is given in the text, teachers do give marks in paper 2
in literature, but language में a lot of importance is given to the style of writing, coherency, flow of thoughts, idea, choice of words, expression. So that makes paper one a bit challenging. No, no, I'm not teaching BST. मैनेज तो करना पड़ेगा। अगर मैं भी अभी यही बोलूँ कि मुझसे मैनेज नहीं हो रहा है, आई एम नॉट एबल टू मैनेज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ, ऐसे बोलने से चलेगा? आई एम मैनेजिंग माय फैमिली, मैनेजिंग माय सोशल लाइफ, मैनेजिंग माय प्रोफेशनल लाइफ, मैनेजिंग माय ऑफलाइन स्टूडेंट्स। आई एम नॉट कंप्लेनिंग। ऑफ कोर्स आई डू गेट टायर्ड, बट देन we have to keep our emotions at time aside and draw in our focus into a place where it is needed for the time being. That is more important. ठीक है? माधव is saying आपकी वजह से कॉमर्स अच्छा हुआ है। थैंक यू सो मच माधव। नाइन्टी फोर अगर आया है प्री बोर्ड्स में इको में, तो थोड़ा सा और मेहनत करो, 100 आ जाएगा। चेकिंग एकदम मॉडरेट होती है, चेकिंग एकदम टफ वफ कुछ नहीं होता है, जस्ट चिल। अब थोड़ा सा पढ़ाई से हट के कुछ बात करें। आई हैव कम हियर टू हैव अ कॉन्वर्सेशन, टू नो यू मोर। लाइक आप लोग क्या करते हो, व्हाट डू यू ऑल डू, व्हाट आर योर एस्पिरेशंस, व्हाट डू यू ऑल वांट टू बिकम इन लाइफ, थोड़ा उस पे बात करते। लेट्स कीप थोड़ा सा बोथ्स को असाइड नाउ। हो गया भाई, ठीक है। इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड एक पड़ाव है जीवन का, भी बहुत सारे परीक्षाएं देनी है। एंड स्पेशली व्हेन लाइफ विल टेस्ट यू, द क्वेश्चन पेपर इज नॉट गोइंग टू बी योर सेम लाइक इन बोर्ड एग्जामिनेशन, इज गोइंग टू बी डिफरेंट। सो उसके बारे में बात करते हैं ना, rather than just talking about boards. ISC Hindi strategy. I have no strategy for other subjects. Whichever subjects are not my domain expertise, I will not give any strategy or anything for that. Again, फिर वही हो जाएगा, jack of all trade, master of none. सब पढ़ा देता है भाई ये. There is no specialization of this banda. So, no. Thank you so much, Shaurya. Edits. सी अपने जूनियर को बस इतना ही बोलना, जो गलती आपने की है ना, मेक श्योर कि आपका आने वाला जनरेशन ना करे। बी अ राइट गाइड टू योर फेलो जूनियर्स। टेल देम दैट हम लोग लास्ट मोमेंट में पढ़ने बैठे थे बेटा, एंड लास्ट मिनट स्टडीज ऑनेस्टली डू नॉट हेल्प वेरी मच। थोड़ा स्टार्टिंग से पढ़ना जरूरी होता है। एटलीस्ट फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर अ चाइल्ड शुड कंप्लीटली गेट एनग्रॉस्ड इन स्टडीज। नहीं तो जो डिफिकल्टी आप फेस कर रहे हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस, पेपर छूट जाना, दिस इज वेरी कॉमन। इट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस। Which car do you have? Kia Seltos, my dear. आपकी मैरिज कब है? नॉट सो सून। अभी तो नहीं। अभी आई नीड टू मेक माई करियर, मे बी 3 years more. No, dear. BST I'm not handling. Tell me, what are your plans for future? Like आपने क्या सोचा है after grade 12? थोड़ा सा उस पे बात करते हैं। What do you think? क्या करना चाहोगे आप आगे? थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करते हैं माइंड को। Now let's not focus about boards, rather BCom with accounts. Nice. BBA लो या BCom? BBA लो या BCom, जिंदगी दोनों में ही झंड है। नौकरी ना आपको BCom करके मिलेगा, ना BBA करके मिलेगा। नौकरी आपको स्किल्स के बेसिस पे मिलेगा। So what is more important is developing your skill set, and especially
a lot of importance and emphasis has to be given in learning artificial intelligence. जो लोग नहीं सीख रहे हैं, ट्रस्ट मी, 3-4 साल बाद ऐसा वेव आएगा, एआई अभी भी अपने फुलेस्ट पोटेंशियल पे, मतलब अभी तो एआई बेबी है जो लॉन्च हुआ है। जब वो धीरे-धीरे ग्रो करना स्टार्ट करेगा, अगर लोग खुद को अडॉप्ट नहीं कर पाएँगे उसमें, अडैप्ट नहीं कर पाएँगे, ढाल नहीं पाएँगे, ट्रस्ट मी आपके लिए कोई नौकरी नहीं होगा फ्यूचर में। No jobs at all. You have to be equipped. And social media and all these platforms on which you all are, Snapchat, Instagram, Reels, YouTube Shorts, which is keeping you hooked and literally feeding filth and बोलते हैं ना गंध आपके दिमाग में जो डाल रहा है, that is drawing you farther and farther away from becoming a successful person in life. You're not understanding that. ये हमें दिखाई देता है। एज़ टीचर्स जब कोई हमसे पूछता है ना कि इंडिया का फ्यूचर कैसा है या आगे क्या होगा, मेरा आँख थोड़ा-सा झुक जाता है। बिकॉज़ विद द काइंड ऑफ किड्स दैट आई एम डीलिंग टुडे एंड द काइंड ऑफ कल्चर व्हिच इज़ नाउ एनसर्कलिंग अराउंड, आई फील वेरी डिसहार्टेंड एंड डिप्रेस्ड टू सी दैट। समवन इज़ सेइंग आपके साथ कोलैबोरेट कर लेंगे, नाइस। To be honest, I want to leave India. Why do you want to leave India? We are the change. Change has to come from us, and we have to be the change. We have to stop giving undue importance and attention to unnecessary content which is going out. It could be anything. It could be anything. And especially this podcast business which is going on right now. Like, apart from one or two podcasters, I find most of the people are just spilling poison, filth, useless content, incredible rumors, too much of hatred which is not required in this world, and undue exposure to social media is generating a kind of generation which is going to self drown themselves in future. That is my opinion and that is my take. Not good. So what have you learned from this 2 years of YouTube journey? From this 2 years of YouTube journey, I have learned is that kids have zero patience nowadays. Everybody wants shortcut to success, which they should not be looking out for, because there is no shortcut to success. And to make my YouTube channel sadly grow, and I use this adjective sadly, is because even I'll have to get into this PR game, public relation game, and marketing gimmick game, because जो दिखता है वो बिकता है, and this is what I have understood. So although I don't want to, I just wanted my channel to naturally grow and people to acknowledge me for the way I teach. But then I don't think so that the algorithm wants that. Rather, it wants more of pooling in of crowd. And yeah, in that manner, maybe I'll have to grow my channel thoda sa. Economics will be taken care of. Will you all stop worrying about economics? आप पहले जाके मेरा वीडियो तो देखो इको का, बहुत अच्छे से आपका इको हो जाएगा, डोंट वरी। Hi Prateek, if you're from Asansol, nice to see you here on my live. Hi Techno, आपके लिए कितना बड़ा डील है ना, लाइक आई जस्ट wonder that, give me a shout out, take my name. Why is it such a big deal for you all? I want to ask you, क्यों ऐसा क्यों है? What do you all get in this? What is the purpose behind this? इंडिया में लोग को रिकग्निशन और फेम का इतना भूख क्यों है?
क्योंकि इसके बोझ के तले बहुत सारे लोग दब गए एंड दे कुडंट हैंडल फेम एंड अल्टीमेटली they were not able to survive those kind of people. So why? फेमस होना, फेमस होना इतनी बड़ी चीज है। सर आईपीएल देखते हो आप? जैसे बच्चों की वजह से मुझे टाइम ही नहीं मिलता आईपीएल देखने का, मैं कहाँ से देखूं? There's no time. Half of the day in the morning time I am planning my lessons, preparing myself for the next class or preparing notes or doing my research work, background work. Free time पे I like to listen to podcast, थोड़ा सा sensible people का, of course not, I don't want to take the YouTuber's name, you all know it, ठीक है? थोड़े sensible लोग का podcast सुनना prefer करता हूँ, that too to improve my vocabulary. There is a purpose and a reason behind it, to improve my vocabulary. And then evening mostly I spend teaching my offline students, and now with the YouTube that has come in, my time is also getting devoted into making videos, curating videos, editing that, learning thumbnail. I'm trying to get better day by day, analytics and algorithm, and ये सब कुछ समझने में टाइम पार हो जाता है अब तो। Yes, Naman, I do remember you. Thank you so much, Narayan. My commerce notes helped me. Demotivate मत होइए, कॉमर्स जैसा भी गया, जस्ट आप भी पॉडकास्ट स्टार्ट कर दो। See, if I do start my podcast channel, then I have thought of bringing ordinary people as guests. I don't want celebrities and famous people to come. I want to talk to normal people, because I'll tell you something. Since podcast पे इतना बात हो रहा है, तो just want to talk something about that. Whenever I listen to a podcast of famous person or personality, what my question is that, see, if a famous personality ka life story I'm listening, is my life same as the other person who's sitting there? That is a question which should be asked. आप जिसका भी लाइफ स्टोरी सुन रहे हो, ठीक है, यू कैन कनेक्ट with that person's life story, you can take inspiration from that person's life story, but क्या हर किसी का लाइफ जर्नी एंड लाइफ स्टोरी एक जैसा होता है? क्या मेरे स्ट्रगल्स बचपन के एंड उस पर्सन के स्ट्रगल सेम रहे होंगे? सो इज माई प्रेशियस टाइम to be devoted into listening someone who I might idolize, but will I become that same person? Do I have the same luck like that of a person? Do I have the same circumstances? The answer is no. And that is why I don't like to compare my life to that of famous personalities or anybody who comes on podcast channel. Rather, I am that kind of a person who would drift into my own mind at the night time and reflect about what did I learn today and what kind of experience did I gain. I rather sit with ordinary person, maybe I'll sit with my friend, and वो corporate में अगर काम करता हो या काम करती हो, मैं उसका लाइफ स्ट्रगल सुनना पसंद करूंगा कि उसके लिए डे टू डे जिंदगी कैसी जा रही है. That is the actual struggle and hustle that nobody pays attention to. The problem is that with India, हम लोग इतने ज्यादा बिजी हो चुके हैं ना दूसरों को admire करने में. And trust me, I'll tell you one thing. I'll tell you one success mantra to become successful in India. And if you want to do a business in India, कोई अगर मेरे से पूछेगा कि इंडिया में सबसे अच्छा बिजनेस क्या है करने का, तो हम बोलेगा इंडिया में सबसे अच्छा बिजनेस है या सबसे अच्छा धंधा है जिससे पैसा बनाना है इंडिया में, दैट इज द बिजनेस ऑफ होप.
Business of Ummid, Germany. Lots of God blessing for your CS preparation. Valverda, whatever is your name. Valverda, ठीक है. Don't pay me and all please. हाँ, भगवान की दया से बहुत है, अच्छा खासा पैसा है. So I was saying that इंडिया में होप का बिजनेस करना बहुत आसान है. आप देखिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप चले जाइए या किसी भी पॉडकास्ट पे आप चले जाइए, किसी भी कोचिंग बिजनेस में आप चले जाइए. सैडली आई कम फ्रॉम अ कोचिंग बिजनेस एंड येट आई एम सेइंग दिस दैट इंडिया में लोग को किसी को भी होप देना बहुत आसान है. बस आप खाली किसी को एक उम्मीद दे दो और उस उम्मीद के बदले आप उससे जितना भी पैसा लूट लो, सामने वाला देने को तैयार हो जाएगा, विदाउट इवन रियलाइजिंग फॉर वंस कि क्या उस उम्मीद को जिसको मैं पकड़ के बैठा हूं, क्या वो मेरे लिए है भी कि नहीं. एंड दैट्स अ सैड पार्ट. दैट्स अ सैड पार्ट. I don't want to name anyone, but then this is what it is, and it's not good. And people do not like. See, for a person like me, this world is not very welcoming. I'm very straightforward. The other day, someone was saying that, Aryan, and बहुत सारे लोग ने मुझे कहा है, Aryan, you're way too upfront. I don't think so that any institution would like to hire you. I said, so be it. I'll do something for my own self. If I am upfront, if I am blunt, this is how I would like to be. ऐसा नहीं है that I do not try to mask up my personality. Yes, I do at times. Not because I want to do it, but because world needs that. A lot many times I have to go against my morals and principles and maybe not say something when I find it wrong because the world needs it. अगर मैं वहां मुंह खोल दूंगा तो शायद सामने वाला को शायद अच्छा ना लगे, माइट नॉट टेक इट इन द पॉजिटिव स्पिरिट, एंड हो सकता है इस लेवल तक गिर जाए कि शायद मेरा जिंदगी बर्बाद करने चल जाए. बट दैट्स सैड, दैट्स हाउ द वर्ल्ड गोज. एंड ऑनेस्टली मैं तो भगवान से हमेशा एक ही चीज प्रे करता हूँ कि आफ्टर दिस लाइफ इन कलियुगा, ये जो मेरा जीवन है इसके बाद मुझे और दोबारा नहीं आना है और मुझे नहीं देखना है. सो मे बी आफ्टर पॉइंट इन टाइम आई माइट लीव एवरीथिंग. आई हैव एवरीथिंग. लाइक आई स्टार्टेड टीचिंग at the age of 18 itself, rather I would say 17 itself. When I was in my school, there was this child, I still remember. He became a CA. His name is Ashutosh Agarwala. And एकदम बोलते एकदम बुड़बक बच्चा. मैं उसको, वो मेरे ही स्कूल वैन में जाता था. एंड ऐसे ही रैंडमली एक दिन उसने मेरे से इकोनॉमिक्स का कुछ हेल्प मांगा कि थोड़ा सा ये समझा दोगे भैया वैन में. एंड आई टॉट हिम, लाइक मैंने उसको बताया कि हाँ इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ऐसा होगा. एंड उसको इतना पसंद आया द वे आई टॉट हिम दैट कॉन्सेप्ट. जैसा आप देखते हो मैं डाइसेक्ट करके समझाता हूँ. ही इज लाइक मुझे आपसे ट्यूशन पढ़ना है. आई सेड डूड आई एम जस्ट इन क्लास 11, like how can I give you tuitions? He's like, no, I want to study from you only. The way you explained it to me, even school teachers भी नहीं कर पाते. So ठीक है, I taught him. बहुत ही ढक्कन बच्चा था. And at that time I had very good terms and relation with my eco teacher in school. She was a female, so she was his teacher as well. तो उन्होंने मुझे कहा कि आर्यन तुम इसके पीछे टाइम वेस्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा, कुछ नहीं हो सकता है, एकदम पढ़ने वाला बच्चा है नहीं, बैक बेंचर है, सारा दिन खाली न्यूसेंस क्रिएट करता है. बट आई एम लाइक नहीं मैम, थोड़ा करते हैं ना मेहनत, उसको करना है तो. एंड आई स्टिल रिमेंबर उसका जब मैं टेस्ट ले रहा था उसने चीटिंग कर लिया था. एंड आई अंडरस्टूड कि उसने चीटिंग किया है, बिकॉज एक बच्चा ऑल ऑफ अ सडन इतना अच्छा कैसे लिख सकता है कोई आंसर. I called for his father and I insulted him like anything. Like, this is how you have raised your son. He cheated and this and that, and my time is wasted. And ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है. And maybe something moved in him that day. And उसके बाद उसने ठान लिया कि he is going to change himself. And trust me, वो बंदा after 6 years, I think last year he had come. He met me and he's like, भैया दिस इज अ रसगुल्ला का डब्बा फॉर यू. मैं सीए बन गया, वो भी वन शॉट में मैंने सीए निकाला है. एंड आपकी एक एक बात मेरे कान में टिल द टाइम आई बिकेम सीए वो गूंजती थी, जो आपने कहा था अबाउट बीइंग ट्रुथफुल टू योर ओन सेल्फ, अबाउट बीइंग
staying away from social media, about being the journey of life and how life is going to test you at different phases. And that was something which was very overwhelming. And that day I decided maybe I'm meant for this profession and I'm not going to give up so soon. Although at times looking at the kids, it compels me to give up on teaching. Like अब मुझे आजकल के बच्चे थोड़ा समझ नहीं आते, सो बट ठीक है, नो, एट द एंड ऑफ द डे जब एक मैसेज देखता हूँ ना कि थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से मेरा ये शायद अच्छा गया, सो आई एम लाइक नहीं, ठीक है, लेट्स स्टे इनटू दिस प्रोफेशन till the time God wants me and till the time that one child who needs me, I'm going to be there by their side. Yeah, I know. Emotional marketing is very easy in India. Absolutely agreed. बहुत आसान है. Any suggestion for us after 12th? See, I'll tell you that life is going to give you twists and turns after 12th. मैं आपको नहीं बोलूंगा बीकॉम अच्छा, बीबी अच्छा, एमबीए कर लेना, लाइफ एकदम ऐसे सीधा लाइन की तरह जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. आपका लाइफ पूरा 360 डिग्री चेंज होने वाला है आफ्टर क्लास 12. ट्रस्ट मी, आपके इतने अप्स एंड डाउन्स आएंगे, इतने जर्नीज आएंगे, आपको इतने अपॉर्चुनिटीज दिखेंगे जो शायद आप मिस आउट कर जाओगे, कुछ ग्रैब कर लोगे. बट नेवर गिव अप होप इन लाइफ. And never think that whatever you're doing or learning is going to go into waste. It is not. आपका हर एक चीज सीखा हुआ काम आएगा. मुझे नहीं पता कौन सा कोर्स अच्छा है, मुझे नहीं पता इंडस्ट्री रेलेवेंट कौन सा है, बिकॉज वी आर इन अ वर्ल्ड वेयर थिंग्स आर रैपिडली चेंजिंग. And although me coming from an education background, I never realized in my wildest dream, or I had never dreamt in my wildest dream that इतना कुछ changes आ जाएगा. And from Aryan Thakur, who had started in 2017, जो अपने डाइनिंग टेबल से शुरू किया था पढ़ाना. आई स्टिल रिमेंबर, मेरे पास एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड था, डाइनिंग टेबल में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की तरह मैं घूम के पढ़ाता था, लाइक बैठ के एक साथ. मेरा उसूल था कि मैं 15 बच्चों से ज्यादा लूंगा नहीं एक बैच में. I'll give personal attention to everyone. There was a time when I had 5 batches of class 12, क्योंकि 15 15 15 करके 75 स्टूडेंट्स थे, तो 5 बैच मैंने बनाया था. But then obviously with time I gained experience. I became an expert of my subject. So handling 35-40 in a class, it has got easier, and of course with the technology as well. But never thought that things are going to change for teachers as well, and especially post COVID-19 के बाद. And I'm every day making sure to learn something new or the other and keep myself industry relevant till I can. Of course, there will come a time when I would want to retire and maybe rest, but not for another 15 years, 15, 16 years. I want to just slog myself, work my dash off, अब आप समझ जाइए, work my ass off, and then maybe I will retire. ठीक है. मैरिज को लेके तो आई डोंट वांट टू, रिलेशनशिप्स को लेके आई डोंट वांट टू टॉक. ये दुनिया जैसा हो गया है, मेरा भरोसा रिलेशनशिप से उठ चुका है. सो मैरिज इज द लास्ट थिंग ऑन माई लिस्ट. इट्स द लास्ट थिंग ऑन माई लिस्ट. बिकॉज आसपास जो देखते हैं ना हम लोग, माई गुडनेस, इट गिव्स मी क्रीप्स टू माई बोन्स. सो नो. हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम गर्ल्स डिस्ट्रैक्शन? प्लीज डोंट ट्राई टू स्टे अवे. राधा बोलते हैं ना, हर किसी को अपना लाइफ का एक बार मेस में घुसना पड़ता है. तो जाओ, गिरो, पढ़ो, सीखो, उससे उठो, एंड राइज लाइक अ फीनिक्स. जस्ट राइज लाइक अ फीनिक्स. जस्ट कम आउट ऑफ इट. So that is the only way. Every experience in life, be it love, be it infatuation, be it addiction, be it anything, every experience comes with a lesson in life. And have that lesson. जब तक आप गिरेंगे नहीं, तब तक आप उठने का इंपॉर्टेंस, कदर कभी नहीं सीखेंगे. तो मैं तो बोलता हूँ, जब भी मेरे दोस्त होते हैं ना कि दिख रहा है कि वो गड्ढे में गिरने वाला है, आई एम लाइक, हाँ हाँ जा गिर ना ब्रो, जा जा गिर. उसको समझाने का कोशिश नहीं करते, उसको गड्ढे में उल्टा गिरा देते, जा तू गिर. क्योंकि आई नो कि उसको समझाएंगे नहीं समझेगा या नहीं समझेगी. सो इट इज लाइक, जा तू गिर जा, जब गिर जाएगा और जब लगेगा कि उठना होगा तब बुला लेना, तब आ जाएंगे हाथ देने के लिए. दैट इज हाउ माई फ्रेंडशिप्स एंड माई सोशल सर्कल्स आर. हम लोग एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं.
हमारा डाउनफॉल को भी हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, किसी को बचाने का कोशिश नहीं करते, जाओ गिर जाओ। दैट इज हाउ वी डील विद थिंग्स। एंड ट्रस्ट मी, टच वुड, हमारा फ्रेंडशिप 14-15 ईयर्स से चल, एंड वी आर वेरी हैप्पी इन आवर फ्रेंड सर्कल, वेरी हैप्पी। Although I have not been able to handle my health, but I surely will from April onwards, because I realize that giving undue importance to your profession is also not going to help. I just lost, just 2 days back, I got to hear that one of my acquaintance, he was 4 years younger to me, he got a heart attack at the age of 24. बहुत खास